हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड पैरामीटर्स होता क्या है? कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क में 4 पैरामीटर्स होते हैं, H11, H12, H21, H22। ये चारों पैरामीटर्स का कोई यूनिट्स या डायमेंशंस जो होते हैं वो चारों का अलग अलग होता है। इसीलिए ये 4 पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स कहा जाता है। एक टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग कंसिडर करते हैं। इनपुट पोर्ट हो गया, आउटपुट पोर्ट हो गया। ये टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट डिवाइस। ये इनपुट करंट है I1, आउटपुट करंट I2, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2। यहाँ पे I1 इनपुट करंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। I1 and V2 are independent, बल्कि V1 and I2 are dependent parameters. They depend on I1 and V2. Therefore, V1 equal to H11 I1 plus H12 V2, because V1 depends on I1 and V2. Similarly, I2 equal to H21 I1 plus H22 V2, because I2 also depends on I1 and V2. Equation 1, equation 2. Now, if we consider a common emitter configuration, then, we will postpone this step for a later use. अगर अभी हम लोग इनपुट टर्मिनल्स को ओपन सर्किट कर देंगे, इफ वी ओपन सर्किट द इनपुट टर्मिनल्स, then I1 equal to 0. Therefore, equation 1 implies V1 equal to H12 V2. This implies H12 equal to V1 by V2. What is V1 by V2? Input voltage by output voltage. This is reverse voltage gain. If we consider a common emitter configuration, then this expression can be written as H12 equal to HR reverse voltage gain E for common emitter configuration equal to V1 by V2 equal to reverse voltage gain. Again, इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिला? I2 equal to H22 V2, because I1 equal to 0. This implies that H22 equal to I2 by V2. I2 by V2 is what? Is admittance. It is output admittance.
output admittance. If we consider common emitter configuration, this can be written as H22 is equal to HO for admittance, E for common emitter configuration, then I2 by V2 is equal to output admittance. Now, if we short circuit the output terminals, then V2 will be equal to 0. तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू H11 I1 implies H11 equal to V1 by I1. What is this? This is input impedance. For common emitter configuration, this equation can be written as H11 equal to H IE equal to V1 by I1 equal to input impedance. Again, equation 2 implies I2 equal to H21 I1. This implies H21 equal to I2 by I1. What is this? This is current gain, forward current gain. If we consider common emitter configuration, our equation can be written as HFE, E for common emitter configuration, equal to forward current gain. So हम लोग का जो 1 and 2 इक्वेशंस था वो अभी कुछ ऐसे लिखेंगे. V1 इक्वल टू 1 मतलब HI हो गया, I1 इसको रिप्लेस कर सकते हैं IB करके, प्लस H12 मतलब HRE हो गया, V2 मतलब VC हो गया, I2 मतलब IC, H21 मतलब HFE, I1 मतलब IB, H22 मतलब HOE, V2 मतलब VC. तो हम लोगों को कुछ नए इक्वेशंस मिल गए हैं. ये इसको हम लोग 3 और 4 मान लेते हैं. अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन एंड आउटपुट एडमिटेंस का. फर्स्ट हम लोग देखते हैं करंट गेन. करंट गेन जो कि होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. हम लोग को पता है एक ट्रांजिस्टर तभी एम्पलीफायर का काम कर सकता है जब उसमें बायसिंग देंगे और साथ ही साथ उसमें एक लोड रेजिस्टेंस रखेंगे और एक सोर्स रखेंगे. तो हम लोग का जो नया डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा. एक सोर्स रेजिस्टेंस होंगे, एक वोल्टेज सोर्स होंगे, पहले क्या था, इनपुट वोल्टेज V1 था, हम लोग इक्वेशन अगर देखेंगे पुराने तो V1 था H11. हम लोग ये देखेंगे VB मतलब V1 है इक्वल टू HIV होगा.
HIIB हो गया प्लस HRAVC हो गया HREVC हो गया और IC VC। फिर इसमें हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हो गया एम्पलीफायर के लिए तो सर्किट। तो आउटपुट करंट हम लोग का क्या रहेगा? आउटपुट करंट रहेगा IL। इनपुट करंट हो गया IB। IL मतलब हो गया रिवर्स डायरेक्शन में है तो -IC बाई IB। अभी हम लोग यहाँ पे नोड ए पे KCL लगाएंगे। अप्लाई KCL एट नोड ए implies IC equal to HFEIB plus HOEVC। resistance into voltage equal to current 1 by resistance into voltage equal to current 1 by resistance into voltage equal to current। तो ये मिला हम लोग को IC। इसको हम लोग VC है, VC को क्या लिख सकते हैं? VC को हम लोग लिख सकते हैं ILRL This implies that IC by IB is equal to HFE by 1 plus HOERL. This implies IC by IB AI minus AI. So AI equal to minus HFE by 1 plus HOERL. This is the current gain. Now come to input impedance. Input impedance equal to V equal to IR, therefore R equal to V by I. Input voltage divided by input current. Input voltage is VB, input current is IC, IB. But we know that Z in equal to V equal to IR, but we know VB equal to IB so VB by IB. Now we have already an expression for VB, that is VB
VB equal to HIE IB plus HRE VC. So if we substitute this equation here, then Zin becomes HIE IB plus HRE VC divided by IB equal to HIE plus HRE VC by IB. What is VC? VC is equal to IL RL by IB. What is IL? This is minus IC RL by IB. So Zin equal to HIE minus HRE IC by IB RL. What is minus IC by IB? This is nothing but AI plus HRE AI RL. So this is the input impedance. Now calculate the voltage gain. Voltage gain AV. Voltage gain equal to output voltage divided by input voltage. What is the output voltage? Output voltage is VC, input voltage is VB. What is VC? VC is IL RL. What is VB? VB equal to Zin into IB. What is IL? IL equal to minus IC. What is minus IC by IB? This is AI. Therefore, voltage gain equal to AI RL by Zin. This is voltage gain. Now, output impedance. First, to calculate output impedance, we have to consider two things. We have to short circuit input terminals. That means Vs equal to 0, and number second is we have to open circuit output terminals. That is RL is equal to infinity. Output impedance now becomes V equal to IR. This implies that R equal to V by I. Output voltage divided by output current. What is the output voltage? Output voltage is VC. What is the output current? Output current is IC. What is VC? VC is ILRL, but RL is equal to infinity. Therefore, we cannot write VC equal to ILRL here. Okay, now apply KCL at node A of the output circuit. If you see the node A of output circuit, this is the node A, then apply KCL. IC equal to HFEIB plus HOEVC. IC equal to HOEVC plus
HFE IB. This we get a value of IC. Apply KVL at input loop. We get KVL apply at input gate. We get Vs equal to 0, Rs into IB, Rs into IB plus IB HIE plus HRE VC equal to 0 because Vs equal to 0. So this implies IB HIE plus HRE VC equal to 0. This implies that IB equal to minus HRE VC by Rs plus HIE. Therefore, IC becomes HOE VC plus HFE into IB, that is HRE VC by Rs plus HIE. We need VC by IC. Therefore, this equation implies IC equal to VC common HOE minus HFE HRE upon Rs plus HIE. This implies VC by IC equal to 1 upon HOE minus HFE HRE by Rs plus HIE. VC by IC is nothing but output impedance, that is output impedance Z out equal to 1 by HOE minus HFE HRE by Rs plus HIE. Or we can write this in terms of output admittance. If output admittance is Y, then its expression becomes HOE minus HFE HRE by Rs plus HIE